All right, so let's talk about your elevator pitch. How many of you have an incredible elevator pitch? Put up your hand. अभी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए थे. Let's put up our hands anyways. Okay, you all have to have an incredible elevator pitch. नहीं तो you are wasting your time. Say it with me. You are wasting your time. If you don't have an incredible elevator pitch, then spend some time making one. It is not rocket science. In fact, I can give you a course. Pen drive अगर किसी के पास है ना, I can give you a course on how to make an incredible elevator pitch. But you don't need a pen drive and a course. We can come up with it right now. Elevator pitch के क्या parts होते हैं? Let's break down the elevator pitch. What are the parts of an elevator pitch? Who wants to tell me what are the different parts? Say them in any order. What are some important things जो elevator pitch में हमारी होनी चाहिए? Your name, ठीक है, good. सारे लिखो. Name. Obviously. Name, company name. Right. What else? What you do? What you do? हाँ जी. How long you are USP? Your USP. Your USP. What is your specialty? The pain you address. The pain you address. Absolutely. About your ask. Your competitiveness. Yes, your competitive edge. हाँ जी. Yeah, about your ask. About your ask, right? Your achievement. Your achievements. हाँ जी. What is in for that guy जिसको आप दे रहे हैं? What is in for that person? हाँ, अगले को आप फायदा क्या दे रहे हैं, right? Pain point क्या है? And yeah, pain point क्या है? And what is your solution to that? Yeah. Testimonials. So, testimonials. Yes. Absolutely. बैंकिंग वाले हमें बताएंगे कि टेस्टिमोनियल जरूरी है, नहीं तो मोटा कस्टमर कैसे क्लोज करेंगे हम, राइट? मैं आपकी बॉडी शेप की नहीं बात कर रहा हूँ, सुरेश जी की कर रहा हूँ. So now you have to let's write these things down. So the first thing is your name and your company name, right? You could even start it off, hi, the latecomer. Everybody give a big round of applause for Tabassum being late. All right. So, Tabassum, rules of the room are latecomers को flogging होएगी. Flogging होएगी. Alright, so now, हाँ जी, आप भी लेट आए हैं, डिपिन भी लेट आया है. चलो इन तीनों की हम बाद में फ्लॉगिंग करेंगे, right? Oh no. Alright, so what we do is in our elevator pitch, you can open up your elevator pitch with a quote, you can open it up with an interesting fact, or you can just go into it, dive right in with your name and your company name. All three are fine. All three are fine. It depends on what mood you're in that day, right? Sometimes when you open up with the quote or you open up with the fact, what it does is when you say something like did you know, right, सबके कान खड़े हो जाते हैं. मैं अभी भी बोलूँगा ना did you know, सबके एक टेंडेंसी होती है थोड़ा आगे होने के लिए, what, right? Curiosity killed the cat. Everybody wants to know, right? So that's a nice way to open up. When you open up with a quote, then that means you're leveraging somebody else's credibility. कि Mark Twain said, and उस वक्त everybody said, इसने नहीं बोला, Mark Twain ने तो कुछ अच्छा ही बोला होगा. Let's listen to what Mark Twain said. ये पता नहीं कौन riff raff आया हुआ, Mark Twain की सुनते हैं. Right? Did you know? And somebody said, these are very important ways to open up. So use those, often use them if you can, and you'll see that you will be getting more of the attention from the audience, right? All right. So then first a quote, an opening line, and or your company name and your own name. ठीक है? Next, you need something that establishes your credibility. So, जैसे इन्होंने बोला था trust, you need something like testimonials, like numbers. If you say it with numbers achieve credibility. Like one of my numbers is that I've trained more than 55,000 people on how to manage themselves better. Now, it sounds better than I have not trained 55,000 people, right? So these numbers sound good. How many years you've been doing this? Like Mukesh said, कि कितने time से आप business में हो? We've in this business, we have a cumulative experience of 340 years. That's like wow. When people say things like this, that's awesome. HDFC के कितने branches हैं? HDFC के कितने branches हैं? You have to count नहीं. Close to 4,000. कुछ बना दो. You don't want to be.
It's 4,000. देखो दावे से बना दो, होएगा पता नहीं टोटल झूठ. No, don't lie. Don't do your research, because if somebody knows otherwise, they'll say यार बंदा झूठ है, because फिर आपके ना question mark लग जाएगा. And if they think you're lying about something, then they are सोचेंगे फिर और पता नहीं कितनी चीज़ों के बारे में झूठ बोलते रहते हो, right? And हम पंजाबियों पर तो वैसे ही शक होता है लोगों को. हम हर चीज़ को या तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 0 ऐड कर देते हैं. Funny but it's true, right? How many Punjabis in the room, by the way? Good, हम हंसेंगे, कोई और हंसा ना. छित्तर पहन के तो अनुसार छित्तर ऐसा एक पंजाबी वर्जन ऑफ फ्लॉगिंग, क्योंकि जुतियों से होती है. And then you talk about a success story. Throw in a success story, maybe a recent success story, that last week I was doing this and this, or we just closed this and this client, or हमने इतना बड़ा business किया, or we made this deal. So a nice success story. उस वक्त ना सारे कहेंगे wow, but वो out loud नहीं बोलेंगे, क्या पता शायद बोल भी दें out loud, but they're certainly thinking it, and then you'll see that a smile comes to their face. So that's important. Success story is important. What else is important is just like we heard here, what are you looking for? What are you asking for? Your ask of the room. Okay, I'm looking to be connected to blah 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 blah. You can be as specific as you want. You can say exactly down to the name, and in fact that's the best way. I take a balanced approach. I'm looking to be connected to leadership and training heads of companies such as blah blah blah, right? Now why do I do both? Because I like to keep it general, कि सबको पता हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, and such as कि अगर किसी के साथ उस कंपनी के में connect है तो that would be tremendous for me, right? But it's the second part is more important than what I did first. It's more important to be as specific as you can be. Do not ask for general things, because nobody gives. If you say something that is too vague, फिर लोग कहेंगे यार चलो that's too wishy-washy. उनकी ना subconscious जो है ना, it will not start to go to work looking for that connect for you. वो कहेंगे ठीक है, कभी ना कभी connect कराएंगे इसको. But if you say I'm looking to be connected to blah 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 of Genpact, एकदम आपके यार मैं Genpact वाले किसी को मिला था, अगली बारी मैं उसको मिलूंगा ना, मैं इनका नाम लूंगा, इनसे कार्ड ले लेते हैं, तो कोशिश करेंगे कनेक्ट कराने की. एंड देन योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग ऑन इट, एंड वन डे यू विल हिट दैट. बट अदरवाइज अगर कुछ बहुत ही जनरल है ना, कनेक्ट मी टू मल्टीनेशनल्स, nobody will. Do you anybody know of any multinationals? हाथ ऊपर करो. Yeah, we all know. And if I say connect me to multinationals, you say where do I begin? पता नहीं किससे connect करना है, वो अच्छा लगेगा कि नहीं, वो अच्छा लगेगा. But if I say connect me to multinationals in the sphere of training and development, then your mind will start to think, अच्छा ये company भी है, वो company भी है. Then you connect me to the learning heads of multinationals. Then एकदम हाँ I know a couple, एक मिली थी मुझे वो पार्टी में. Then you can start to zero in. Right? So be as specific as you can be. Next, acknowledge the type of business anybody has helped you close and KMGMs you've done and things like that. So the next section is acknowledgements. And lastly, end with a lasting impression. End with that impression कि अगला कहेगा wow, that was awesome. कि आपके बारे सोचते रहें, बेशक अगला अपनी अब एलिवेटर पेज दे रहा है, उसको सुनेंगे नहीं. No, okay, listen to the next person too. But it has to leave a lasting impression. That's that memory hook. कि उसके बाद ना वो कहेंगे यार इनमें दम ज़रूर था. So that thing has to be so important. Every time I turn around, मुझे ना अपने side of the eye से दिखता है सुरेश जी आगे खड़े हैं. फिर देखता हूँ सुरेश जी यहाँ बैठे हैं. It's like too much. It's too much. I'm not overdosing. I mean, more the merrier. But I keep thinking, हवा बन के मेरी तरफ देख रहे हैं. Then I see, no, he's smiling. फिर इनकी अच्छी smile ना मेरे headaches भी cure कर देती है. अच्छा, चलो. So now let's. Can you elaborate on this
Absolutely. In a sense of what would be a lasting impression. Okay. A lasting impression would be that maybe a good quote about yourself or a tagline. Okay, how about this? Help me complete the sentence. पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. That's a lasting impression. है कि नहीं? क्योंकि आप जब जाते थे किराने वाली दुकान जब 80s में, and उस वक्त your washing powder चाहिए यार, अच्छा वो यार निरमा दे दो, because or you'll always have that in mind, right? That lasting impression that keeps going through your head, that keeps going through your memory. So everybody has a tagline. You just have to find what's yours. Now, what is somebody's tagline? Somebody in this room, put up your hand and tell me कि आपके बारे लोग क्या कहते हैं, और what is a slogan you have, or what is a tagline जो आपके साथ जुड़ी हुई है. हाँ जी. Your own GST ecosystem. हाँ, your own GST ecosystem. End with that. Or it could be at the start, or you can say, once again, I'm so and so, just to remind you, I am your own GST ecosystem. Or I'm Gulraj Singh Shahpuri and I create leaders. That's one of my taglines. Or I'm Gulraj Singh Shahpuri and I mean business. That's one of my taglines, right? Something that's a nice way to end with. Something that will leave a lasting impression in their mind long after your speech is done. Because then that's that last impression. आप किसी के घर जाओ एंड में आप बहुत अच्छा डिनर हुआ, आपकी बड़ी अच्छी खातिर हुई, एंड एंड में आप ये तो नहीं कह के निकल जाएंगे ना, ओके जी बाय बाय. आप दरवाजे पर खड़े होंगे, उनको बोलेंगे ये बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा, आपने इतनी अच्छी, यू मस्ट कम टू आवर हाउस, ये तो मेमोरेबल था, ये था वो था. एंड घर जाके फिर आप उनको एक व्हाट्सएप भी भेज दोगे एंड मेंशनिंग समथिंग सो स्पेसिफिक, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर, आवर किड्स लव द होल एक्सपीरियंस, ब्ला ब्ला ब्ला, वी मस्ट डू दिस अगेन सम टाइम, राइट? व्हाई डू वी डू दैट? एज द लास्टिंग इंप्रेशन. राइट, के जाते जाते एक इंप्रेशन छोड़ के जाना है. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. एलिवेटर पिच में ना एक चीज जरूरी है, एंड विल टॉक अबाउट दिस अगेन. हाँ, विल टॉक अबाउट दिस अगेन, बट एलिवेटर पिच में एक चीज जरूरी है कि यू हैव टू वेरी योर एलिवेटर पिच वंस इन अ व्हाइल. आप सोचो कि अगर हर हफ्ते आप सेम चीज़ सुनते रहो, हर हफ्ते हम सेम चीज़ सुनते रहो, हाँ बोलेंगे नहीं जी अच्छी हैमरिंग हो रही है कि जी बड़ा अच्छा याद हो रहा है इनका, क्योंकि ये हर बार ये रिपीट करते रहते हैं. थोड़ी देर के बाद ना आप बोर होने शुरू हो जाओगे. एज सून एज ये बोलेंगे आप ट्यून आउट हो जाओगे एंड उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है. टू मच ऑफ अ गुड थिंग. रोज आप बेसन के चीला खाना शुरू कर दो, 6 सालों बाद आप कहोगे गुलराज यार आज मेरी जान ले लो, आज अब मुझे नहीं करना, मेरे यार मुझे इससे बेटर तो मरना ही ठीक है. You will say यार हद हो गई है. I was in this other networking platform, I'll not mention the name. एक बंदा है जिसकी elevator pitch, I was there for 4.5 years. उसकी 4.5 साल elevator pitch same थी. And every time he spoke, you know what I used to do? And everybody in the room used to do this. His credibility शुरुआत में तो questionable होनी शुरू हो गई, बाद में इतनी नीचे पहुंच चुकी थी ना, वो बेसमेंट तक खोद चुका था credibility में. I'm telling you, nobody cared what he said, nobody even wondered कि आता भी क्यों है. Nobody ever gave him business, and that was one extreme. Another extreme is the person that switches the elevator pitch every week. देखो इतनी भी हद नहीं है. You need to find a balance. The sweet spot is maybe every 3 weeks. Maybe every 3 weeks switch it, and then you can come back to your old one. Don't worry, come back to your old one as often as you like. मैंने क्या किया हुआ है कि मेरी एलिवेटर पिचेस जो है ना, मैं हमेशा ना डेट वाइज उनको सेव करके रखता हूँ एक फोल्डर में कॉल्ड एलिवेटर पिच, एंड हर हफ्ते स्लाइट वेरिएशन होएगी या नहीं होएगी, एंड देन मैं सोचूंगा अगर सपोज 1 साल निकल गया एंड देन आई थिंक यार अब मेरे पास कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं है, देखते हैं पिछले साल मैंने क्या बोला था. डेट वाइज हमेशा है, खोला उसको, देखा कि रेलेवेंट है नहीं है तो थोड़े से चेंजेस किए एंड था बस रेडी, राइट? सो इट्स अ नाइस थिंग टू डू. सो कीप योर एलिवेटर पिचेस ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट so that you can always refer to them. So that you might have said something very ingenious one time. Now आपकी एलिवेटर पिच की डिलीवरी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है. A great man, one time, I'll keep his identity confidential, but उनका last name था मंशरमानी. उन्होंने मुझे एक बार एक अच्छी चीज़ बोली, कहते हैं कि गुलराज एलिवेटर पिच अगर रट के बोलो ना, एंड ऐसे ऐसे बोलो without a paper, ऐसे बोलो, बड़ी एनर्जी आएगी. So I tried that one week. I won a prize.
Imagine, my first prize. मैं हमेशा सोचता था मुझे कभी प्राइज नहीं मिला, उस वक्त मुझे प्राइज मिल गया, रट के बोली मैंने एलिवेटर पिच, and it was so good. Then I used that theory. मैं अक्सर क्या करता हूँ, रट के ही बोलता हूँ विदाउट पेपर, वरना मेरे कंप्यूटर पर मेरे आगे फर्रे होते हैं, so बस मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं, राइट, कि इतनी बारी रटा, बट फिर भी वहाँ जाके ना कभी कभी सिटी विटी गुम हो जाती है, so I don't want to be confused, so आगे मेरे पॉइंट्स लिखे होते हैं. That's why I always use my computer when I'm giving my elevator pitch. But actually your elevator pitch has to be memorized. It has to be memorized, but still have a paper in front of you. Now, having a paper in front of you, अपनी लात पर कुहाड़ी मार रहे हो, but you don't want to be there confused and stumbling and fumbling and कुछ याद ही नहीं है, फिर थोड़ी देर के बाद शर्मिंदा होके बैठ जाओ. You have to have a paper, but रटो इतनी बारी कि पेपर की ज़रूरत ना पड़े. But अगर पेपर है ना, your subconscious will look at that paper unfortunately. So I found a midway कि मैंने थोड़े से बस bullets बनाए हुए हैं अपने स्क्रीन पर कि मुझे पता है कि next sentence किस चीज़ के बारे है बस. But it should ideally be on paper and it has to be memorized. And I'll tell you why. If you can't say your elevator pitch to a stranger, then really what are you doing? You see, why is it called the elevator pitch? क्योंकि it is said कि this whole pitch was memorized on कि elevator ride में पूरी की पूरी कहनी पड़ जाए, right? Let's say Mukesh and I are we don't know each other, and मैं बस किसी जगह जा रहा हूँ, मेरे हाथ में गिफ्ट है, किसी सोशल फंक्शन में जा रहा हूँ किसी के घर, मैं लिफ्ट में जाके 18th फ्लोर प्रेस किया, एंड भागता भागता एक शख्स आया, मुकेश, and he said hold the lift, and he comes in and he's also suited booted, and इसके हाथ में एक वाइन बॉटल है, and मैंने कहा what floor, and he says 18. मैंने कहा अच्छा हम सेम पार्टी जा रहे हैं. He said oh apparently. So I shake my hand, I'm Gulraj Singh Shahpuri, and he says I'm Mukesh Gulati, and I ask क्योंकि what do you do, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, what do you do, and he starts to stammer and stumble and fumble. उस वक्त एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा मेरे माइंड में कि ये जो करते हैं वाकई does he do a good job, because he can't even describe it. When asked, he doesn't really have clarity on how to say what he does. If I ask you in the middle of the night, मैं आपके घर आके विंडो तोड़ के मैं आपके बेड में क्रॉल करके ऐसे पूछना शुरू करूं, बताओ करते क्या हो, will you have the answer before you wake up and realize कि आप है कौन, मेरे बेड में क्यों कर रहे हो, एंड विंडो से कैसे आए, एंड कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो. You have to subconsciously you have to be able to say your elevator pitch. आपकी subconscious जब बड़बड़ाना शुरू कर देगी ना, then you are convinced you do what you do. Because देखो हम सब में एक होता है कि हमारी elevator pitch ना हमारी एक our best version होता है, हमारी एक हसरत होती है कि मैं भी ऐसे लगूंगा, मैं थोड़ी और कोशिश करूँ, I'm almost looking like this, right? But when you memorize it so much, your subconscious believes it completely. And I'll tell you one thing, you become that right away. पहली बात तो. Secondly, when somebody asks you what do you do and you're in a different situation, उस वक्त लिफ्ट में आए हो, आप किसी को नहीं जानते हो. You see, in Tajurba meetings we're prepared. We're mentally prepared. यहाँ होएगा, ये होएगा, वो होएगा, ये ऑर्डर होता है हर चीज़ का, and then उसके बाद ये ऑर्डर होएगा हर चीज़ का, and उसके बाद फिर मेरा ये होएगा, वो होएगा. We're prepared for these things. एक लिफ्ट में we're not prepared, aren't we? But उस वक्त ना, that's the time when you have to be really, really good at this. Elevator pitches are there so that when somebody asks you आप क्या करते हो ना, bam, 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 you confidently answer. क्योंकि if you can't, उनको पता है कि ये कच्ची मिट्टी है. They know this. And I was making the same mistake. मैं वो networking platform, उसमें तो मैं बड़ी अच्छी अपनी pitch बोल रहा था. But otherwise, when people would ask me, I used to stammer and stumble. अब करते क्या है जी? I'm a leadership coach. I also teach influence and I was like this. And then people would already have a question mark. I should have been very prepared. मेरी elevator pitch. When they would ask me, "Acha, what do you charge?" I would have a daily rate. What do you charge an hour? I would have had that. I would have had everything. And then people would say, "Okay, he is something." And you know, जाके पता है क्या सोचते हैं afterwards? They think that was one confident guy, or that was one confident lady. She must do exactly what she's saying.
That must all be exactly the way it is. Otherwise question mark लग जाता है. And bankers को पूछो, एक question mark लग गया ना आपकी credibility पर, लोन नहीं देंगे आपको. Unless पैसे खिला दो फिर सब ठीक है. Right, so you have to be able to say it to a stranger. You have to be able to say it in the middle of the night when somebody wakes you up and पूछते हैं आप करते क्या हो.